welcome everyone to today's first session. I'm your host, Hafsa Idris, co-founder Daastan, and today we will be talking about digital design and technology. We have young Ida and Amy with us. Before I start, I'll just give a quick introduction of Anna, what she has been doing, so we know what's her background before I jump into the questions. Uh, your your voice is cutting down. Like आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही है आपकी. Up, TK, is it better now? Yeah, no best. Okay. So Anam is actually founder and CEO of Arty. She has been working in the graphic designing industry for almost 4 years now. And before starting Arty, she was working with various other companies and she attended many workshops to build up her network, her skill set, her experience. And now her dream is to make Arty an international company which helps people like her to achieve the dreams. And she has also been working for Daastan on and off, right, Anam? Yeah. Hello everyone. Thank you very much for your time and for agreeing to do this session with us. Yeah, no, it's my pleasure. It's so nice to see you. Um, okay, and let's talk about the digital design. I would like to know, how did you decide to go into this field? Because when I was growing up, everyone would say, be an engineer or a doctor or a lawyer. All other fields are not good enough, and you will not Yeah. have a career, and this is not successful. And how did you decide to go into designing? And then how has the journey been like? Well, I am a software engineer. Firstly, Okay, so ऐसे हुआ था. Yeah, you did my go on CV. the You know, right uh, track. I love designing. ठीक है, I just started my journey. It's like जैसे आप कहते हैं ना हमारे पाकिस्तानी लोग कि जी स्टार्ट करें, पेरेंट्स कहेंगे ये बन जाए वो बन जाए. So I Yeah. did BS, then I did software engineering. But a time came where I am not happy with myself. Like I'm pleasing everyone. तो Hmm. मैंने लाइफ में सोचा लाइक I'm tired of it. Like I have to do something. क्योंकि Hmm. मैंने अपनी जर्नी में बहुत सारे लोगों को देखा लाइक ये करते हुए कि बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं लाइक फॉर यू मस्ट हैव अ पर्पस टू लिव. तो इस तरफ आई जस्ट स्टार्ट डिजाइनिंग ना लाइक मुझे शौक था कि मुझे इस फील्ड में जाना है क्योंकि मैं हमेशा से ना कलर्स में लाइक आई जस्ट लव कलर्स. मुझे हर चीज में कलर्स चाहिए. मैं इवन कोडिंग करती थी तो आई जस्ट मेक इट हाईलाइटेड एंड रेड एंड माय क्लास वाले से लाइक प्लीज डूड दिस इज नॉट द राइट थिंग इट्स कोडिंग स्टॉप इट. आई मेक फ्लावर्स एंड डू दिस एंड दैट. सो Right. मुझे हमेशा से उस चीज़ का शौक था. मैंने अपने लाइक जर्नी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आई डिड ट्राई टू डू कोडिंग एंड आई जस्ट लेफ्ट ऑन द लैपटॉप बिकॉज मुझसे नहीं होता था. तो Hmm. मुझे कलर्स चाहिए थे. सो देन आई स्टेप इनटू लाइक डिजाइनिंग. स्टार्टिंग से हमेशा ही शौक था कि लाइक आई हैव टू डू इट आई हैव टू डू इट. बट इन द एंड मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने अपने लिए कुछ करना है. सो आई डिड इट. आई क्रिएटेड एन आर्टी. सो आई जस्ट मूव ऑन एंड नाउ Hmm. स्ट्रगलिंग हार्ड लाइक कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ लोगों की हेल्प आउट कर सकूँ. So that's the best thing I can do for them. And I had some sort of similar story. हुआ ये था कि my parents, they wanted me to be a doctor because my elder sister, she decided to go into engineering, so they thought एक तो Oh, होना चाहिए doctor. And yeah, then yeah, I did pre-medical in FSC, and I thought, no, I cannot do this because this is not me. yeah. And I remember, जैसे ही मेरा FSC complete हुआ for BSc, I chose subjects that I wanted to do, and everyone was so disappointed and Yeah. sort of mad also because I chose psychology, geography, and Oh God. things I never studied because Oh God. it was also partially a revenge because I thought नहीं अब मैंने वो नहीं करना जो मुझे सपने कहने हैं, मैंने just वो करना है जो किसी को उम्मीद भी Exactly. नहीं है. um, Exactly. and I'm so happy I did that because that was the point where I thought I can do something different, and it's not as bad if you do not follow these Yeah. narratives where only doctor is successful or Yeah. engineer is Exactly. successful. Exactly. Yeah. Best. Like I also think like being a woman हम लोगों को भी इतना right होता है कि we really Hmm. have to make our own decisions. I know क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता था. इवन जब मैंने अपने इंजीनियरिंग खत्म की पेरेंट्स वर लाइक जाके ना गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर दो डू दिस एंड दैट एंड आई सेड like no it's not me I can't do it.
देन आई Right. enrolled in e-रोजगार एंड देन वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड इट लाइक गो ऑन एंड ऑन. फिर मैंने लाइक दास्तान ज्वाइन किया और फिर मैंने और अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया, अपने आप को Hmm. ग्रूम करने की कोशिश की. सो इट्स लाइक कि हर वुमेन को ये सोचना चाहिए अपने बारे में एक Hmm. पॉइंट पे. आई नो Hmm. अब अगर आपका पैशन या प्रोफेशन ऐसा है लाइक जैसे मेरे एक डिजाइनिंग है, ठीक है, आई डिड इंजीनियरिंग क्योंकि मेरे पास एक Hmm. डिग्री है, ठीक है, फॉर पेरेंट्स और फॉर वर्क फॉर आवर सोसाइटी हमारे लिए डिग्री बहुत मैटर करती है. तो आप डिग्री जरूर करो, लेकिन इसके साथ जो भी आपका स्किल सेट है आप उसको यूज करने की कोशिश करो. लाइक हाउ यू कैन डू दिस, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज कर लो, यूट्यूब है, गूगल है, एवरीथिंग Hmm. इज अवेलेबल ऑनलाइन. लाइक टेक्नोलॉजी तो इतनी ज्यादा एक्सपैंड हो चुकी है, यू कैन इजिली यूज इट. सो आई थिंक यू शुड थिंक ऑन दैट नोट कि लाइक आप करो, अपने लिए स्टैंड लो, डू समथिंग फॉर Hmm. योर Hmm. सेल्फ. And I think जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हैं ये रियलाइज करना, Yeah. उतना अच्छा होता है आपके लिए, बिकॉज अदरवाइज समटाइम्स इट्स टू लेट टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ, Yeah, क्योंकि exactly. फिर हालात इजाजत नहीं देते, लोग यूज्ड हो बिल्कुल, जाते हैं कि ऑफ कोर्स शी विल डू व्हाटएवर yeah, वी टेल हर, एंड yeah, yeah, शी इज वेरी exactly. ओबीडिएंट एंड नाइस Yeah, एंड yeah. So I'm so happy you did this. But with designing, are you considering somehow any part of your software engineering skill set, or is it just completely no. out of the table now? No. It's no, I think I just left software engineering aside. Like I do like web development and stuff like designing and all this, but I'm not interested. I Hmm. just like मैं इस चीज को इसलिए अपने साथ लेके चलना चाहती हूँ क्योंकि मैं पीछे नहीं रहना चाहती किसी से भी, इवन टेक्नोलॉजी में कहीं पे भी. तो Hmm. मेरे लिए यही बेटर होता है कि मैं उस चीज को साथ लेके चलूँ. तो आई वाज थिंकिंग कि अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ आगे अपने जो डिजाइनिंग की फील्ड है उससे रिलेटेड कोर्सेज हो गए, डिफरेंट स्टफ हो गया, मतलब आई हैव अ नो ऑफ एवरीथिंग, इवन मार्केटिंग, इवन लैंग्वेजेस, जो मैं अब साथ साथ लेके चलना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी से पीछे रहूँ. क्योंकि बीइंग ए सीईओ आई शुड नो एवरीथिंग फॉर मी. True. फॉर मी इट्स नॉट फॉर के लोगों को दिखाने के लिए मुझे ये भी मिला है, मुझे सर्टिफिकेशन एंड डू Of दिस एंड दैट. course. इट्स फॉर माई सेल्फ, फॉर माई ग्रूमिंग. कि मैं अगर डिफरेंट फील्ड के लोगों के साथ बैठूं तो आई कैन इजीली कनेक्ट विद इट, आई कैन Hmm. टॉक विद हिम, आई कैन लाइक गेट नॉलेज. मेरा मेन फोकस भी हमेशा ये होता है कि मैं जिस फील्ड के बंदे के साथ बैठूं आई शुड नो. इवन Hmm. आई एम सिटिंग विद माई फादर, इवन ही इज डूइंग एनीथिंग इन हाउस, बाबा ये कैसे होगा, हाउ आई कैन डू दिस, I know I Right. can do this. I can Hmm. create a lot of ideas. I know, Hmm. and like with short passage of time, I can do this and this and this. तो मेरा हमेशा मेन फोकस ही इस पे यही रहता है कि मुझे बस कुछ अच्छा करना है. आई हैव टू मेक समथिंग चेंज इन माई सेल्फ ऑन डेली बेसिस. लाइक Hmm. आई वॉन्ट टू बी समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर एनी बॉडी, जस्ट फॉर Of माई course. सेल्फ. You also have a self where you also have your own wishes and things you want Yeah, to do. And it doesn't mean you're doing it for yeah, to brag or so. It's just also yeah, that you feel good कि आपको अच्छा yeah, लगता है कि मैंने कुछ अपने लिए भी uh, किया है eventually. exactly, exactly. Right. So हमें पता है so many fields in Pakistan, they are so male dominated, they're so patriarchal. I think Yeah. including IT, right? Mm-hmm. जब आपने IT और designing और इसमें कदम रखा, do you think it was also hard to make your own to make yourself visible in this male dominant field? Did you feel any Yeah. discrimination, और होता था कि क्या लड़की है इसको क्या इतना आइडिया, और पढ़ा भी इसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, so let's just give second thoughts. So Yes, exactly. Yes, yes, yes. hmm, This happened with me all the time. You hmm, know, male dominancy is like something happening all around the world. Even you may say it in my family, my relatives, everyone. In your right, family, in your relative, everywhere it's happening. You know, absolutely. I my brother started his own company. I started my own. Okay. Hmm, He did something, people appreciate. Okay. Everything like वो कुछ cakes ले आएंगे, कुछ करेंगे appreciation, having our status, he did this. And I make my own company. I struggle a lot. People not even think, okay, she's doing okay, well, it's okay. Like they they are don't even doing acknowledge. like this. Hmm, Yeah, they never acknowledge me. They never say why you're how you are doing this, because hmm, I think I am struggling much, much, much more than my brother. hmm, It's like physically or it's mentally. hmm, uh, I know he's sitting all around the day and doing something. I know he's doing technically, but I am doing physically. I'm doing my homework. I'm like घर का काम करना, बाहर का काम true. करना, अपना साथ में प्लेटफॉर्म रन करना, उसमें देखना. आई हैव एन एम्प्लॉयज, मुझे उनको भी सेट करना, जो मेरे पास प्रोजेक्ट्स आई हैव टू रन दैट. बट नो Hmm, पीपल एक्नॉलेज दैट. इट्स लाइक ओके शी इज डूइंग इट, hmm, ओके ओके, व्हाट, लाइक
पीपल सबका हमेशा एंड में यही होता है कि लड़की ने शादी करनी है एंड आफ्टर दैट उसको घर के काम ही करने हैं। हमारे हम्म, जो पूरे पाकिस्तानी अवाम है या ऑल अराउंड द वर्ल्ड दे ऑलवेज थिंक, इवन जब आप कहीं स्टेज पे जाओ, कहीं जाओ, अ मैन इज सिटिंग बिसाइड्स यू, हम्म, वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा बनिस्बत वुमेन्स के। अगर मैं कहीं हम्म, जाके प्लेटफॉर्म में एक मर्द के साथ बैठकर बोलूँगी, तो लोग उसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। लाइक दे सेड नहीं, हम्म, वुमेन ज़्यादा है, वो बाहर निकल के नॉकरी करता है तो वो बेस्ट है। उसको लाइक ज्यादा आप घर पता में है। काम करती हो। जी, यू हम्म, डोंट नो एनीथिंग। इवन आई नो मच मोर देन माय ब्रदर, सिस्टर, रिलेटिव और एनीथिंग। बट यू नो वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली बिकॉज़ ही इज़ मेल, तो वो लोग हम्म, ज़्यादा पसंद करते हैं इस चीज़ को। हम्म, तो आई डोंट नो, हम इस चीज़ को ख़त्म तो शायद नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके ब्रेन के अंदर फीड इन हुआ। सो ट्रू, इट्स लाइक आई कांट, आई फील इट। लाइक मैं इवन कहीं पे भी जॉब पे भी जाती थी जहाँ पे लाइक आई वर्क यूज्ड टू वर्क एज डूइंग एन इंटर्नशिप, नॉट लाइक नेम नहीं लूँगी इसका। तो वहाँ पे भी सेम यही इश्यू था। वहाँ पे कोई भी लेडीज़ आगे नहीं जा सकती थी, किसी और मतलब डिपार्टमेंट में नहीं मूव कर सकती थी। शी हैड टू टेक लाइक अ लॉट ऑफ स्टेप्स एंड गो हम्म, ओवर देयर। लाइक मैंने अपना इंटर्नशिप छोड़ा भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ इसलिए था कि मुझे मेंटली स्ट्रेस होने लग गया था, आई कांट डू एनी वर्क। तो मैंने इसलिए स्विच किया, जस्ट स्विच इट एंड मेक माय ओन प्लेटफॉर्म। तो मैंने डिफरेंट जगहों पे मूव किया, डिफरेंट लोगों के साथ काम किया। आई लव टू हम्म, वर्क विद स्टार्टअप्स क्योंकि मुझे सेम, लगता है स्टार्टअप के साथ आप बहुत ज़्यादा लर्न करते हो। इट्स लाइक कि आप एक फील्ड में डोमेन में रह के काम नहीं करते। बहुत ज़्यादा डोमेन्स होती हैं जिनमें स्टार्टअप्स आपको सिर्फ एक काम नहीं देता। उसमें आप मैनेजमेंट भी कर सकते हो, डिज़ाइनिंग भी करोगे, टेक्निकल रिलेटेड भी होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, यू लर्न अ लॉट। हम्म, वो आपको अपॉर्चुनिटीज खुद प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हो ना, तो यू जस्ट स्टिक टू लाइक योर ओन डिपार्टमेंट। हम्म, आप कहीं और मूव नहीं कर सकते। तो मेरे लिए ये बहुत लाइक अपॉर्चुनिटी थी कि मैंने बहुत एनआईसी में काम किया, मैंने बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ काम किया एंड आई लव कि मैंने उनको वर्किंग करते हुए देखा, वहाँ पे इवेंट्स अटेंड किए एंड आई जस्ट लव इट। वहाँ से मुझे लाइक पैशन, लाइक आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ हम्म, एंड आई जस्ट लव इट। तो मैं भी सबको यही कहती हूँ, लाइक जस्ट गो फॉर इट एंड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ एज वेल एज फॉर सोसाइटी टू, कि जो आपके हम्म, इर्द गिर्द के बच्चे हैं, जो भी हैं, जिनके लिए आपको यू हैव टू वर्क फॉर दैट। ट्रू। सो आई एंड आई थिंक थिंक हम लोग जो कह रहे हैं, इंक्लूडिंग यू और मी और women like us who have taken stand for themselves, या I या think aista aista, I hope this will change the narrative of people in our society कि औरतें भी कुछ कर सकती हैं. They also have their own या set of observation and या skills and ideas which are not necessarily better than men but just या different. So या why not एग्जैक्टली include them and give यस them the equal validation and not just say तुम्हें क्या पता या because एग्जैक्टली तुम तो बाहर होती हो. And I think it's way harder to do stuff at home and then also stuff यस for yourself because यस then एग्जैक्टली एग्जैक्टली you're divided in two selves where one is यस to take care of home and also यस this शादी के बाद you have to be good enough to be यस accepted and एग्जैक्टली सारी जिंदगी आप इसी में अच्छे बनने में गुजार देते हैं कि यस आगे जाके आपको acceptance मिलनी है नहीं मिलनी. और फिर यस additionally to this, when you want to do something for yourself and you do it, I think that takes much more courage and यस energies and time. यस एग्जैक्टली Right. एग्जैक्टली So I'm so happy you did it. Really, I didn't know it. Omar never told me. It's a personal secret that I disclosed today. No, I mean he's always very vocal about women, and he sometimes when Yeah. we talk, he tells me, "Okay, I You know, support my sisters, and I really yeah, want I know. them to do Yeah, something." yeah, he's supportive. He's supportive in a lot of way for me. Like he always took stand. Like father के सामने खड़े होना. No, she can Yeah. do this. Let her go. Let her go. But Mm, father is like, मैंने कहा बाबा पूरे पीछे ना एक फौज लेके आती हूँ मैं अपने. You will protect me. I can do it now. I'm grown up. Like let yeah. me go. And he said no. He's Mm, very protective. My father is like so protective for me. He's like, no, you can't go alone. But I my think brother just go. most fathers in our society they are, and I mean partially they're right. Of course there are Yeah, things which I which know. which, which they think much more than us in Yeah, this age, but yeah, there has to be a balance, so yeah. sometimes you have to give space to your children and trust Yeah, them, and exactly, I exactly. mean in the limits, of course. Yeah. Anyway, Anam, let's talk about your platform, Arty, which you made after so many struggles and so on. उसके बारे में थोड़ा बताएं. What is it about? कौन कौन उसको join कर सकता है? I mean, you told already what was the idea. You wanted हाँ, to do something for हुँ. people like you who want to be into designing and all. But still, what was the inspiration? And थोड़ा सा Arty को explain करें.
ओके, आरटी इज बेसिकली अ वुमेन लेड प्लेटफॉर्म, या आप उसको Hmm. नेम से जाहिर करोगे कि आरटी, आरटी इज लाइक रिलेटेड टू आर्ट, लाइक एवरीथिंग Hmm. इज आर्ट। मैंने उसको आरटी के साथ रिलेट किया Hmm. क्योंकि स्टार्टिंग से आई लव आर्ट, तो मैं आर्ट से रिलेटेड डिफरेंट स्टफ लोगों को ज्वाइन इन करना चाहती थी, देखना चाहती थी कि लाइक आर्ट से रिलेटेड हाउ आई कैन प्रमोट इट, क्योंकि हमारे Hmm. जो जितने भी फेज ऑफ लाइफ है सब लोग ये कहते हैं कि नहीं, आर्ट इज नथिंग, लाइक आप आर्टिस्ट बन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आर्टिस्ट है ही नहीं कुछ, तो इंजीनियर बनो, ये करो और वो करो। तो मैं तो आई रियली वांट टू प्रमोट इट। सो ऑन Hmm. यूजिंग माई प्लेटफॉर्म इट्स लाइक कि क्योंकि मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है, so Hmm. that I can put it on my product that I'm creating. So Hmm. from that, like RT say, I'm going to give you services like designing, graphic designing services, digital marketing, printing, and we Hmm. have a product with name Artisto, जिसके अंदर like you can sell, आप अपना प्रोडक्ट लेके आओ हमारे पास, हैंडमेड प्रोडक्ट हो गया, डिफरेंट प्रोडक्ट, वट एवर यू वांट टू सेल, आई विल हेल्प यू टू सेल इट। इसी तरह क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया, इट्स बीइंग एन एयर, बट लाइक मुझे उसको चलाने में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही हैं, क्योंकि मुझे बार बार Hmm. उसकी पॉलिसीज रिवाइज करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जब जी. मैं हम प्लान्स तो बहुत कुछ करते हैं, हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, देयर आर अ लॉट ऑफ लाइक स्ट्रगल, लाइक बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, Hmm. सेम एज आई एम फेसिंग, क्योंकि मेरा जो प्लेटफॉर्म है इट्स हैविंग एन ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज एंड एन लाइक अ प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों की टारगेट ऑडियंस फर्क है, तो आई हैव अ वन पेज, देन मुझे उसको करना पड़ा, 2 पेजेस में करना पड़ा, लाइक इट्स डिफिकल्ट फॉर मी कि मुझे करना क्या है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब उस चीज़ को मैंने लेके आया, विजुअलाइज किया, तो इट्स वाज really difficult for me. Like Hmm. now I'm going to revising my policies different, having a live sessions with different like new designers, helping them to promote it. तो इस तरह I am like working on it still। जो मुझे join करना चाहते हैं, जो हमारे platform पे, you can, if you have any like arts related stuff, you have paintings, you have handmade products or anything you want to sell, you can have it on our platform, you can contact me and Arty। Hmm. So I think it's a short term कि आप उस चीज़ को सिर्फ यही कह सकती हूँ शॉर्टली कि इट्स अ बाय एंड सेल प्लेटफॉर्म राइट नाउ, क्योंकि मैं अभी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ। वी हैविंग अ डिजाइनिंग कोर्सेज जो कि इंशाल्लाह मैं ईद के बाद प्रॉपरली लॉन्च करूँगी। सो ऑल्सो मेरा ये भी प्लान था फॉरवर्डली कि मैं जो हूँ आगे जो फोटोग्राफी है उसको भी थोड़ा सा लेके चलो, बिकॉज आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि जो मुझे कह रहे हैं कि प्लीज मैम हमें ये भी टीच करें, ये भी टीच करें। सो आई वाज थिंकिंग कि प्रॉपर कोर्सेज के तौर पे इनको लॉन्च किया जाए, तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं इसको करूंगी, देन आई विल प्रॉपरली लॉन्च इट एंड देन गेट बैक टू यू अगेन। Yes, why not? Yeah, absolutely. Or I was going through your website, मैं कल check करी थी, हाँ, and I really loved the banner that you had made it. So I want to ask, आपने खुद बनाया or did somebody help you, no, 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 or no. did I Umma made help it you? by myself. I made it Wow. by myself. I do manipulations like this type and artistic type stuff. So belt illustrations and this have mix and match for Hmm. everything. Hmm. तो मेरा मोटो भी यही था कि ड्रीम क्रिएट एंड शोकेस, बिकॉज आई हैव ड्रीम अ लॉट। माय फ्रेंड्स साइड मुझे कहते हैं ना शेष चीले के ख्वाब जो देखती हूँ मैं वो वाली बनती हूँ। बट आई ऑलवेज सेड कि मैं जो ख्वाब देखती हूँ मैं उसको पूरा भी करती हूँ। ये मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मेरी अपनी ही एक कंपनी हो जिसमें मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ। Hmm. लुक, बेसिकली जो मेरा आरटी मैंने बनाया भी था उसका एक ये इनिशिएटिव भी था कि जो मेरे इर्द गिर्द के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो क्यूट क्यूट से मेरे स्वीट हार्ट से मैं उनको भी थोड़ी हेल्प आउट करूं, क्योंकि मेरे पास अभी एक पेंटिंग लाइक मैंने हमारे मेरे पास एक अभी खैर मौजूद नहीं है इस वक्त। वो बच्ची आई थिंक शी इज अराउंड 6 to 7 year ओल्ड, और उन्होंने मुझे एक प्यारा से कैनवस पे शी डिड अ पेंटिंग। तो Hmm. आई थॉट आई शुड हैव बाय, मैंने उससे बाय की एंड आई एम गोइंग टू सेल इट इंशाल्लाह ऑन माय प्लेटफॉर्म। तो Hmm. मेरे पास इस तरह के छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने काम किए हुए हैं, तो मैं उस चीज Hmm. को, अब वो इतने खुश कि जब मैंने उनके हाथ में लाइक पैसे दिए कि आई एम टेकिंग इट फ्रॉम यू, तो इट्स Hmm. लाइक दिस इज फॉर मी, दिस इज फॉर आई लाइक जो उस वक्त की खुशी थी, जो बच्चों की एक स्मॉल एज से उनको पता चला कि अर्निंग किस तरह करनी है। लाइक आई एम Right. ट्राइंग टू क्रिएट अ बिजनेस इन एवरी होम। Hmm. मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई आपको इतना हाई फाई बंदा नहीं मिलेगा। मेरे पास जितने भी बच्चे हैं दे आर फ्रॉम सेकंड ईयर, दे आर फ्रॉम लाइक यूनिवर्सिटी गोइंग, मतलब ऐसे नहीं है कि बंदा क्या प्रोफेशनल, Hmm. लाइक आई एम ग्रूमिंग देम। मैं उनको डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करवा रही हूँ, मैं उनकी हेल्प आउट कर रही हूँ, मैं उनको बता रही हूँ कि किस तरह आपने लेके चलना है। और मैंने ये इनिशिएटिव अपने घर से स्टार्ट किया। लोग हमेशा ये Hmm. कहते हैं कि आप लोग भाई बाहर जाके बोलते हैं करते हैं, मतलब ये बहुत सारा क्रिटिसिज्म आपको सबसे पहले स्टार्टअप से मिलता है कि आप जो True. बड़े बड़े चीजें बोल रहे हैं वो जाके आप लोगों में तो बोल रहे हैं, लेकिन आपने अपने घर से क्यों नहीं चीज शुरू की। ये Hmm. सबसे पहला सवाल हर कोई आपसे करता है। तो मैंने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले अपने बहन-भाइयों को डिफरेंट स्किल सेट सिखाए। सिस्टर को फोटोग्राफी, जो मेरा छोटा ब्रदर है उसको मैंने इट्स लाइक वेब डेवलपमेंट के साइड में इलस्ट्रेशंस, वीडियो एडिटिंग, इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल सेट्स, ताकि वो लाइक
उस एज में जब यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल से निकले बाहर, तो उसके पास उस टाइम बहुत डिग्री के साथ साथ बहुत सारे स्किल सेट हों, ताकि इफ ही वांट टू कंटिन्यू हिज ओन जॉब और वांटेड टू डू हिज ओन बिजनेस, तो वो Hmm. इजीली उस चीज से कर सके। तो आई थिंक कि अगर स्मॉल एजेस में से या टीन एजर में, जहाँ पे आप अपना जो टाइम वेस्ट कर रहे हो टिकटॉक की वीडियोस बनाने में फॉर जस्ट फॉर फेम एंड ऑल दिस, यू कैन डू समथिंग क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव, Hmm. नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर कंट्री। ताकि आप जहाँ से आपने मतलब अगर स्मॉल एज से आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि उस एज में बच्चों का माइंडसेट बहुत ज्यादा ना फ्रेश होता है, तो वहां वो जितनी जल्दी चीजों को पिक कर सकते हैं, आई थिंक वो बेस्ट टाइम होता है। अगर आप उस चीज को स्किल सेट को पहचान लो और उसके बाद उसको पॉलिश करते रहो, तो आई थिंक Hmm. दैट वाज द बेस्ट थिंग। सो आई एम Hmm. रियली ट्राइंग टू डू दैट। सो आई एम सो हैप्पी कि मैंने एक स्टेप उठाया, मैंने कुछ चंद बच्चों को सिखाया और वो आगे माशाल्लाह अपने अपने बिजनेसेस, अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, एंड आई एम सो सो हैप्पी। सो आई एम I think इंशाल्लाह डूइंग समथिंग। I think they will always remember this first thing that you provided या them, no matter how या successful they get in their life. And I think it's या so precious. It's so या special. या आई Um, एम सो Yes, I want to talk about the technology that now we use. Also, I mean, for RT and all, we are using lots of softwares and या platforms. I mean, I remember जब मैं school में थी and I used to do art. I loved doing art. I did not have a laptop. I did not have an iPad. मेरे पास इस तरह का कुछ भी नहीं था. So I just had a paper and a pen, and I would just draw something what I wanted to, and then see ये color इसके साथ अच्छा लगता है, ये color नहीं, or proportions ऐसी होनी चाहिए. That was more trial and error. Now I see there are so many things in the market which you can use, and you do not really manually need to do things to see if they work out or not. Now they're already prepared. You just have to press a few buttons, and you can actually see everything visually in front of you on the screen. Yes, um exactly. so I mean, I still do not use a lot of them, but I mean, you are into this technology, digital stuff, so I Yes, wanted to ask you, do you think with these devices, platforms, applications, ऐसा हुआ yes, है कि yeah. हमारी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं कम हो गई है, कि we really depend on what's already there and Mhm, what is ready made, and we just use mhm, it a little bit, change it a yes, little bit, and then yes. pass it on as our original work, for example. Well, you can easily say that like these days like Canva is the most like on the top. Hmm. लेकिन इस चीज से आप कह सकते हो कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, दोनों है। क्योंकि देखें, जो हम एज बीइंग ए डिजाइनर, हम लोगों के बहुत सारे लाइक हमारे एयर्स होते हैं जो हम लोग पूरे साल लगाते हैं, मेहनत करते हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल पर्सपेक्टिव, हम सब एलिमेंट्स को Hmm. रीड आउट करते हैं। Hmm. आपके पास एक सिंपल सॉफ्टवेयर है, आप उसके अंदर डालते हो चीज एंड यू आर लाइक Hmm. गोइंग थ्रू इट एंड वो आपके सामने बन के आ जाता है। अब Hmm. यू इवन डोंट नो हाउ इज द प्रोसेस, कलर्स हमने किस तरह चूज किए, हमारे Hmm. पास सारी चीजें कैसे आई, डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या थे, एलिमेंट्स क्या थे, सारी मतलब यू इवन डोंट नो, यू इवन डोंट Hmm. स्टडी। आपके Hmm. सामने बस आके आपने पोस्ट बनाई एंड डाल दी। इससे बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज डिजाइनर्स को हो रहा है। वो कहते हैं कि हम फ्री ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़े हुए, हम उससे कर लेते हैं, व्हाई आर वी गोइंग टू पे यू फॉर दिस। तो Right. इससे हम लोगों की मेहनत, हम लोग जितना टाइम स्टडी करते हैं, इवन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने पूरे प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमेंट्स मैंने अपना कोई 1.5 साल लगाया होगा, 1.5 या 2.5 साल समझ लें, इन Hmm. चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कि मैं अब सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि लोग लाइक लिटरली लाइक करते हैं। आप Hmm. काम अगर चलाना चाहते हो, यू डोंट नो अबाउट ब्रांडिंग, आपका एक ब्रांड है, आपको उसको किस तरह लेके चलना है, यू डोंट नो अबाउट हाउ टू मार्केट इट, तो इससे कोई आपको फायदा नहीं होता। आप लोग जस्ट लाइक अपना टाइम पास करके जस्ट कर लो, अपना पैसे बचा लो ब्रांड के लिए एंड जस्ट गो फॉर इट। तो ये मुझे ये ठीक नहीं लगता। फॉर मी इट्स अ बिग डिसएडवांटेज, जो कि लोग नॉर्मल लोग नहीं समझते। Hmm. तो मैं लोगों को बेसिकली यही एडवाइस करती हूँ कि आप एक प्रॉपर डिजाइनर हायर करो फॉर अ प्रॉपर ब्रांड। अगर आप एक प्रॉपर ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, आप एक डिजाइनर हायर करो, ही नोज कि आपको उसको किस तरह लेके चलना है। तो बेशक जितने ज्यादा फ्री सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, उससे नुकसान हम लोगों को भी हो रहा है और उनको भी हो रहा है। वो ये चीज नहीं अंडरस्टैंड करते कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, वो आपने एंड में आपका एक कस्टमर है जिसको आपने सेल करना है, उसकी साइकी आपने समझनी है, वो क्या चाहता है, उसकी एज क्या है, उसके हिसाब से उनके कलर्स क्या जाएंगे, उनके हिसाब से कंटेंट क्या जाना है, पिक्चर्स किस टाइप की लगनी चाहिए, डिजाइनिंग किस तरह की होनी चाहिए। ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारे इंटर्न रखे। बच्चे आते हैं, दे जस्ट नो इलिस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप एंड दे सेड दैट लाइक हम डिजाइनर हैं।
एंड लाइक आई सेड कि आपको कलर कंट्रास्ट नहीं पता, यू डोंट नो प्रोपोर्शन, यू डोंट नो एलिमेंट्स, यू डोंट नो कि उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, व्हाई वी आर यूजिंग दिस विद दिस, आप मुझे बताओ. व्हेन आई आस्क्ड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे सेड मैम वी डोंट नो, वी जस्ट लाइक इट सो वी जस्ट पुट इट. तो आई वाज लाइक यार कि डिजाइनिंग को लोगों ने बिल्कुल ही इस टाइम खत्म कर दिया है कि वो है क्या चीज, यू मस्ट हम्म, अंडरस्टैंड इट. क्योंकि आप मैं मेरा हमेशा एक असूल रहा है कि जब भी मैं किसी चीज को स्टार्ट करने लगती हूँ मैं उसकी डेप्थ में जाती हूँ. फ्रॉम बेसिक आई स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक, इवन आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नया सीखना है मैं उसकी बिल्कुल डेप्थ में जाऊंगी कि वो स्टार्ट किस तरह हुआ. तो मैं सबको यही मशवरा देती हूँ कि हमेशा बेसिक से स्टार्ट करें. अगर आपकी बेस मजबूत होगी तो आपका उसके ऊपर जो बिल्डिंग आप क्रिएट कर रहे हो ना वो बहुत स्ट्रांग होगी. अगर आपकी हम्म, बेस ठीक नहीं है तो आप जितना मर्जी आपका एक्सपीरियंस हो, कितने कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि जिनका एक्सपीरियंस होता है 30 ईयर्स 16 ईयर्स, बट उनके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती क्योंकि वो अपने आप को डेली बेसिस पे इंप्रूव नहीं करते. न्यू टेक्निक्स न्यू ट्रेंड्स आते हैं, आप उनके साथ चलो, आप ट्राई तो करो, लीस्ट ट्राई द टेक्निक्स. आप उसको किस तरह चेंज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई जस्ट सेड टू द पीपल लाइक प्लीज जस्ट लर्न डिजाइनिंग देन डू डिजाइनिंग. ऐसे नहीं कि बस उठाया इलस्ट्रेटर लर्न किया जैसे मैं डिजाइनर हूँ, मुझे बस पैसे चाहिए, पैसे कमाने वाले, मेन हम्म. चीज पैसे कमाना है हमने. सो आई And you know, this unrealistic way of doing things, for example, जिसके पास कैमरा है वो आजकल प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गया है. जिसके पास एग्जैक्टली फोटोशॉप है कंप्यूटर में वो डिजाइनर बन गया है, उसको ग्राफिक एग्जैक्टली डिजाइनिंग आ गई. जिसके पास पेंट्स है उसने कुछ भी बनाया वो पेंटर बन गया. And I एग्जैक्टली think uh, I mean, it's okay if there is something that makes you happy, fine. But then do not have these unrealistic expectations के लोग हमारा काम उतना ही appreciate करें जितना एक जी properly skilled designer का, for example. एग्जैक्टली And then एग्जैक्टली they feel disappointed and depressed एग्जैक्टली because they do not get that kind of validation and recognition, and then they start thinking, oh, I'm not good enough, or वो भी तो ऐसे ही करता है, and मैं भी तो ऐसे ही कर रहा हूँ. What is the यस difference? So I यस think this mindset we need to change. यस एग्जैक्टली Hmm. आई एग्री विद यू. So you have also worked with Daastan, which is a platform of your brother. How was it working with him? You know And when, yes yes, 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 it's gone. you know I never tell anyone that I am his sister. तो हम जहाँ कहीं भी जाते हैं ना we are like he is like Mashriq and I'm like Maghrib. We both are like this. You know, most of his like friend meets with me like at the event. I never tell them that I am his like sister or what. Hmm. I just introduce myself that I am a designer. I'm working in Daastan and Hmm. around that. तो ऐसा ही होता है कि जब मैं कहीं पे भी जाऊँ कुछ भी हो तो भाई के रेफरेंस से आई नेवर टोल्ड एनीवन. तो भाई की अच्छी खासी लंबी चौड़ी लोग या तो बुराइयां कर देंगे अच्छाइयां कर देंगे. आफ्टर दैट सडनली ही इंट्रोड्यूस मी, मोस्टली ही इंट्रोड्यूस मी, आई नेवर सेड दैट आई एम माय सिस्टर लाइक. तो Hmm. ऐसे ही होता है. फिर जब जाती हूँ वो लोग बताते हैं, दे वर लाइक शॉक, नहीं आप नहीं हो सकती, आप उनकी बहन नहीं हो सकती. मैंने कहा मुझे पता है क्योंकि उनकी नेचर और मेरी नेचर बहुत डिफरेंट है. आई लव वर्किंग विद हिम Hmm. समटाइम्स लाइक बिकॉज भाई के साथ काम करना ना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम मुझे लगता है. वो ऐसे Hmm. क्योंकि आप उन वो किस कंपनी के सीईओ हैं एंड यू आर लाइक वर्किंग अंडर हिम. तो वहां पे अगर उनके साथ यू नो बहन का रिलेशन उसके बाद एज एन एम्प्लॉय का रिलेशन इज टू डिफिकल्ट. सो मुझे उस दोनों चीजों को बहुत बैलेंस रख के करना पड़ता है. इवन घर में भी भाई से ले लो ना जाके ये कर लो, वो भाई का प्लेटफॉर्म. मैंने कहा नहीं, यू नो Hmm. मैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बहुत डिफरेंट रखती हूँ. वो अगर भाई के साथ कोई पर्सनली ग्रज है तो वो ठीक है, वो अलग है. लेकिन व्हेन आई एम वर्किंग प्रोफेशनली आई एम Hmm. प्रोफेशनली वर्किंग विद हिम. तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है लेकिन उनकी वजह से मुझे बहुत एक्सपोजर मिला है एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम इन लाइफ. क्योंकि अगर शायद मैंने अपनी आर्टी स्टार्ट किया तो उनके धक्के पे स्टार्ट किया. मैं बड़े अरसे से प्लान करी थी मैंने करना है तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो चुका था डिजाइनिंग में. तो आई जस्ट थॉट व्हाई शुड नॉट आई लाइक मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टफ स्टार्ट करूँ, डिजाइनर्स को प्रमोट करूँ इस तरह. तो आई हैव हैड अ लॉट ऑफ लाइक स्टफ इन माय माइंड जो कि मैंने आर्टी में इम्प्लीमेंट करना है. इंशाल्लाह सून आई एम गोइंग टू लॉन्च इट. पहले ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहती. एक प्रॉपर वे में करूँगी. Of तो course. इसलिए लाइक आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माय लाइफ एंड कि मैं उनके साथ काम करती हूँ. मुझे इतना ज़्यादा जो यू माइट से अ फेम काइंड ऑफ Hmm. वो मुझे उनकी वजह से मिला. ही लाइक हेल्प मी enroll in different like APYV India. I just won it. I like second prize over there and आई थिंक अगर मैं ना जाती दास्तान के थ्रू वहां ना होती. आई वर्क रियली हार्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म कि इंडिया में जाके मैंने लाइक पाकिस्तान का नाम रोशन किया. आई एम सो 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 हैप्पी.
क्या आई डिड दिस। और डिफरेंट इसी तरह के हैकाथॉन्स थे जो कि हमारा लाइक एहसास हैकाथॉन हुआ, वहाँ मैंने आई जस्ट लाइक वहाँ पे भी हम लोग लाइक फाइनल्स तक पहुँच गए थे। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट बहुत अच्छी अच्छी पर्सनालिटी के लोगों के साथ जाके बैठी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। एंड आई एम सो हैप्पी लाइक कि मैं कहती हूँ हर किसी के पास एक ऐसा भाई होना चाहिए जैसा मेरे पास है। And you know what I really like about him is that he always keeps a balance between people he know and Yes, people he does not know. So we yes, do not get a feeling कि वो कुछ खास लोगों को फेवर कर रहा है या उनको yes, ज्यादा yes. opportunities दे रहा है या हाँ, नहीं दे रहा है. हाँ, yes, So exactly. this what I really admire about him. I mean, if you know him for a long time, I mean, I know him since 10, 11 years now. Yeah, Um, when there was no Daastan, when I hadn't published my book, when he had not published his book, we yeah, were yeah, working for. There was a online newspaper. It was yeah, Shashka. yeah. I don't know if you Yeah, know yeah, it. yeah, I know. And we were working together for that platform, and also I think a Revolution of Flame. There was something Yeah, yeah, like that. yeah, I know. And that's how we met. And so I know him since a long time. And I mean, we also had our friendship and ups and downs. And I think I Yeah, didn't talk to him for 2 years because there were some things we just had a yeah, fight yeah, and conflicted. But yes, again, this is what I admire about him. yeah, If exactly. if you have something Hmm. which is Yeah, good enough, it doesn't matter if he knows you, if he does not know you, if he had a fight with you or a conflict in yeah, the past, he would always support you as much yeah. as he can. So You know, एग्जैक्टली लाइक ऐसा होता है कि क्योंकि वो मेरे भाई है ना तो सब लोग ये समझते हैं कि ही इज गिविंग मी फेवर्स इन अ लॉट hmm, ऑफ स्टफ। hmm, बट और लाइक अगर आपको सीरियस नोट पे बताऊं ही नेवर डिड। hmm, मैं कहीं अप्लाई करना होता है मैंने कहीं पे भी लाइक किसी भी एक्सेलरेटर जो भी आपके पास आते हैं प्रोग्राम्स आते हैं वो कहते हैं कि अपने बेसिस पे करो। hmm, वो मुझे रास्ता ज़रूर दिखाते हैं कि यू कैन डू दिस, अप्लाई इन दिस एंड दिस एंड दिस। तो hmm, वहाँ पे वो मुझे इस तरह नहीं हेल्प करती कि मैं उनका रेफरेंस यूज़ करूँ कि लाइक वो मेरे भाई हैं तो एज़ इन दास्तान एज़ लाइक ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो मैं कभी भी नहीं करती क्योंकि मुझे एक अना होती है ना of मेरे अंदर course, वो you have बहुत your है। own या identity, you have of your own. आई वांट टू मेक माय ओन आइडेंटिटी एंड आई नेवर ट्राई टू यूज हिम, इसलिए मैं बहुत कम लोगों को बताती हूँ। मैं मोस्टली बताती ही नहीं हूँ। वो Hmm, बाज़ दफ़ा स्लिप ऑफ टंग यू नो हो जाए कि बता दे बंदे को तो पता चल जाए एल्स आई डोंट टेल एनीवन कि वो मेरे भाई है इसकी वज़ह से ये हो रहा है वो हो रहा है। और ही नेवर फेवर्स मी कहीं भी किसी भी कंपटीशन में ही नेवर डिड। वो कहते हैं अपने ओन पे ही आल्सो लाइक पुल मी कि अपने ओन पे जाओ खुद करो। रास्ता ज़रूर दिखाएँगे यू कैन डू दिस 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 एंड बाकी आपने किस तरह करना है इट्स अप टू यू। आई टेक अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम हिम कि मुझे ये हेल्प करें ये करें तो ही डिड दिस लाइक ठीक है ये करो ये कर सकती हो ये ठीक hmm, है ये नहीं। hmm. सो मैं यही कहती हूँ लोग समझते फेवर करते हैं बट आई एम टेलिंग यू No, ओपनली ही नेवर डिड दिस। and I think he does it as well. I mean, I 2 दिन पहले when we were finalizing this session, मुझे नहीं पता था you are his sister. Really, दैट्स I, द I बेस्ट पार्ट। I guessed because of course your last names are same. या But I thought, yeah, okay, there are many people with this name, so it could also be a coincidence. And I asked him, and he said, "Oh, she's my sister." And it was, I know him for a long time, but even मुझे भी नहीं पता था कि आप उसकी बहन हैं. And I know you've been working for us and you've designed a lot of things for us on and off. या But he never said, he never told. None of us knew. Maybe some people were closely working, but I didn't या personally. या So this is something I can confirm. Um, anyway, so Adam, I think that's all I had for you, and it was such an interesting session. और आज मेरा आखिरी session actually. बाकी ओह जो है this is Omar करेगा because he ओह wanted to do it. So I'm थैंक done गॉड आई for एम today. नॉट I said, thank God I'm not having a session with him. It would be so difficult seeing him all day and not having a session with him. So I'm glad somehow I could do it. But it was Yeah, so so interesting happy. to get to know you and to talk to you, really. So And nice. I haven't laughed so much in any of the sessions, You know, honestly. it's a live session. It's a live session, so I'm being, a little bit a calmness and but originally, if we met face to face, you're going to laugh more than because I hope, I think we all need it yeah, sometimes exactly. to Yeah, let exactly. it go. Okay, Yeah. then Adam, I'll let you go, and I hope you have a Okay. good day. Thank you very much for Thank such a you.
fun-filled, interesting session, and I look forward to Perfect. talking to you again. Sure, why not? My pleasure. All right, take care of yourself, and till next Okay. time. Bye. Bye bye. Bye.